Assalamualaikum everyone. Today's our topic is an introduction to derivative markets and securities. Aim accustom the student with the theory and term related to hedging, contracts, options, set, and method of hedging. Service member civil relief. It stands for SMCRA. As per SCRA, a security derived from a debit instrument, share, a loan, whether it is secured or unsecured risk instrument or contract for differences or any other form of security. A contract which derives its value from the price or indexes of price of underlying securities, it's called a derivative. Growth of derivative. Factor driving growth of derivative is increase the volatility in assets price in financial market. B point is that the increase the integration of national financial market with the international market. ठीक है इसकी इंटीग्रेशन जो है नेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स की किसके साथ इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ market improvement in communication facilities and sharp decline in their cost. ठीक है मार्केट क्या करे मार्केट की इम्प्रूवमेंट क्या होगी वो कम्युनिकेशन अपनी वो क्या करे किसकी फैसिलिटीज दे आपको कम्युनिकेशन फैसिलिटीज दे एंड शार्प डिक्लाइन इन देयर कॉस्टेज अपनी कॉस्टेज में कम करें जल्दी जो है तेजी तेजी जो अपनी कीमतें हैं वो कम करें और ज़्यादा development of more purchase risk management tool providing economic agent a wider choice of risk management strategies and innovation in the derivatives market which optimally combine the risk and return over a large number of financial assets leading to a high return, reduce risk as well as transaction costs as compared to individual financial assets. डेरिवेटिव्स क्या करते हैं आप लोगों का रिस्क हेज करते हैं क्या करते हैं रिस्क जो है मिनिमाइज करते हैं कम करते हैं रिड्यूस करते हैं एज वेल एज उसके साथ साथ ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट एज कंपेयर टू इंडिविजुअल फाइनेंशियल एसेट्स जो कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करते हैं जो कंपेयर की जाती है किसके साथ आपके फाइनेंशियल एसेट्स के साथ Now, forward and future. A forward contract is a customized contract between two entities where the settlement takes place on a specific date in the future and today is a pre-agreed price. So, future contract is similar with similar is forward, but little bit is difference is here. A future contract is an agreement. एक मिनट बेटा wait एक मिनट A future contract is an agreement between two parties to buy or sell an asset at a certain time in the future at a certain price. Future contracts are special type of forward contract in the sense that a formal standardized exchange trading
कॉन्ट्रैक्ट ये हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होती हैं जो इंटरमीडिएट्स हैं वो इन्वॉल्व हो। उसके बाद आ जाते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस आर टू टाइप्स, कॉल एंड पुट ऑप्शंस। कॉल गिव द buyer the right but not the obligation to buy a given quantity of the underlying assets at the given price on before a given future date. And puts give the buyer the right but not the obligation to sell a given quantity of the underlying assets at a given price on or before a given date. After that आ जाते हैं warranties. Options generally have lives of up to 1 year. The majority of option traded on option exchange having a maximum maturity of 9 months. A longer date option are called warranties and are generally traded over the counter. Then leaps. Leaps mean the long-term equity anticipation securities. These are the option having a maturity of up to 3 years. Then basket option are option on portfolio of underlying assets. The underlying assets is usually a moving average of basket of assets. Equity indexes option are from basket option. ये बास्केट ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन पोर्टफोलियोज होते हैं आपके, ठीक है, डिफरेंट जो अंडरलाई करते हैं, अंडरलाइंग एसेट्स होते हैं। ये अंडरलाइंग एसेट्स यूजली मूविंग करते हैं किसकी तरफ? एवरेज एसेट्स की तरफ। जो इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन आर फॉर्म ऑफ अ बास्केट ऑप्शन। इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन जो होते हैं वो क्या है? फॉर्म है या टाइप ऑफ किसका है? बास्केट ऑप्शन का। नाउ स्वेप्स. Swaps are a private agreement between two parties to exchange cash flow in the future according to pre-arranged formula. They can regarded as portfolios of forward contracts. The two commonly used are sweeps. Number one is interest rate sweep and number two is currency sweeps. Interest rate swaps, entail swapping only interest related cash flow between the parties in the same currency. ठीक है, उसके बाद करेंसी स्वैप क्या होता है? इसमें these entail swapping both principal and interest between the parties with the cash flow on the direction being a different currency than those in the opposite direction. Here is example of swap. ठीक है, यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए एंड बी। पार्टी ए जो है वो जो है इंटरेस्ट ले रही है, कितना ले रही है? 9.45%, ठीक है। और जो पार्टी बी है, सॉरी उसका क्या नहीं, पार्टी ए जो है वो फ्लोटिंग है और पार्टी बी है जो उसका एसेट नेट जो है इंटरेस्ट रेट है वो उस पर फिक्स है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पार्टी ए इज करेंटली पेइंग फ्लोटिंग रेट, ठीक है। पार्टी ए क्या है? वो फ्लोटिंग रेट पे करी है बट वांट टू पे अ फिक्स रेट। बट वो क्या कह रही है कि मुझे फिक्स रेट चाहिए, फ्लोटिंग रेट मुझे नहीं चाहिए। बेटा फ्लोटिंग रेट मीन के रेट में चेंजिंग, कभी कम कभी ज्यादा, मतलब उसका एक फिक्स रेट नहीं है, उसमें वेरिएशन हो रही है। इट्स कॉल्ड फ्लोटिंग रेट। Party B currently paying a fixed rate but want to pay a floating rate, ठीक है। अब पार्टी बी है वो कह रही है कि मुझे जो है ना, मेरे पास फिक्स रेट तो है बट मैं जो है ना फ्लोटिंग रेट चाहता हूँ। मतलब एक फिक्स नहीं हो, फॉर एग्जांपल 8% फिक्स नहीं हो, मुझे फ्लक्चुएशन वाला चाहिए, भले उसमें ऊपर नीचे हो, क्या पता इससे ज्यादा भी हो उससे कम भी हो। फ्लक्चुएशन में तो फिर ये होता है ना, तो वो मतलब दोनों अपने रेट से एग्री नहीं, तो ये एग्री नहीं तो वो क्या करेंगे? आपस में एक्सचेंज करेंगे। इनका प्रिंसिपल अमाउंट सेम होगा, सिर्फ रेट में फर्क होगा, उसका फ्लोटिंग है उसका फिक्स्ड है।
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, फिर स्वीप देयर एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस और अस्सलाम देयर वालेकुम मैडम। डिजायर्ड ऑब्लिगेशन, ठीक है। फिर वो क्या कर लेंगे, अपनी ऑब्लिगेशंस को स्वैप कर देंगे, ठीक है। Hedge a contracts. Sorry, hedges and contracts. Part 1, contracts, spot contract, forward contract, future contracts, market to market, ठीक है। ये जो है इसके कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप यहाँ पे बताए गए हैं। An agreement between buyer and seller for immediate exchange for assets and funds, it's a spot contract, ठीक है जी। एग्रीमेंट हो दो बंदों के बीच में, बायर सेलर के बीच में, और वो इमीडिएट एक्सचेंज हो एसेट्स या फंड्स जो है वो आपस में, मतलब जरूरी बात है, अगर आप सिक्योरिटी सेल करोगे तो रिटर्न में आपको पैसे तो मिलेंगे ना, इट्स आल्सो टाइप ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट टू ट्रांजैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर एक्सचेंज ऑफ सेट ऑफ अमाउंट ऑफ एसेट्स एज अ सेट प्राइस। यहाँ पर बोल रहा है जरिए पहले, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी बायर भी इन्वॉल्व है, इसमें सेलर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम कब बना रहे हैं, फ्यूचर एक्सचेंज के लिए, फ्यूचर। अब वो फ्यूचर हम उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डेट और डे फिक्स करते हैं। हम क्या करते हैं, डेट और डे फिक्स कर देते हैं उसमें। तो ये कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट सेट कर रहे हैं, एक अमाउंट सेट कर रहे हैं एसेट्स का, एक पर प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस पे फ्यूचर डेट के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। Future contracts, an agreement to transact involving the future exchange of set amount of asset of price that is settled daily, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एग्रीमेंट ट्रांजेक्ट का जो इन्वॉल्व करती हैं फ्यूचर एक्सचेंजेस ऑफ सेट ऑफ अमाउंट एसेट्स को और प्राइस दैट इज सेटल्ड डेली, जो डेली बेसिस की प्राइस सेटल होगी उस पे होगा वो कॉन्ट्रैक्ट। मैम ये डेरिवेटिव की तो टाइप नहीं, डेरिवेटिव सॉरी बेटा, मैम ये डेरिवेटिव तो टॉपिक नहीं है। बिल्कुल डेरिवेटिव ही है। आप थोड़ा सा लेट आए हो ना तो आपको पता नहीं चला। अच्छा मैम। नाउ हेज, a hedge is an investment position intended to the offset potential losses gain that may be incurred by a companion investment. In simple language, a hedge is used to reduce any substantial loss gain suffered by an individual or an organization. सिंपली ये क्या होता है, आप लोगों का या कंपनी का या इंडिविजुअल का या ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क रिस्क को जो है रिड्यूस वो करना। मिनिमाइज करना, उस रिस्क को रिड्यूस करना, उस रिस्क को कम करना। A hedge can be constructed from a many type of financial instruments, include a stock exchange, traded funds, insurance forward contracts, sweep option, many type of over-the-counter and derivatives product, and future contracts. ठीक है, ये सब हेज में आ जाते हैं। जाहिर की बात है, आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एक जगह पे 10 लाख या 20 लाख इन्वेस्ट करने से बेहतर ये कि वो आप 10 लाख डिफरेंट 10 जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, आप लोगों की जो है ना रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, कि किसी एक जगह पे आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10 लाख कर रहे हो, वहां पर अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप ये 10 लाख ही वेस्ट हो लॉस में जा रहे हैं, आपको 10 लाख का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर वही 10 लाख आप 10 डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हो या 5 डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर किस कहीं पर लॉस होना भी होगा तो उन 10 में से या उन 5 जगहों में से किसी एक जगह भी लॉस होगा या 2 जगहों में लॉस होगा, बाकी 3 जगहों में तो आपको प्रॉफिट होगा ना। तो वो क्या करेगी, आप मतलब हेजिंग क्या करती है, हेज क्या करता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है, कम करता है, इसीलिए इसको ये कहते हैं। Hedging with forward contract, off balance sheet
a form of financing in which large capital. Wait, एक मिनट बेटा. हेलो Yes, yes, hello. आवाज आ रही है? मैम, आवाज कट रही है बार बार। बेटा एक्चुअली क्या है कि सिग्नल्स इशू है, मौसम ऐसा, वेदर, ड्यू टू वेदर सिग्नल्स बहुत वीक है. यस मैम, स्पीड जा रही है बार बार। उस वजह से यहाँ पर भी ऊपर भी नोटिफिकेशन आ रहा है, स्क्रीन के ऊपर भी मेरे पास. कोई बात नहीं, एडजस्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह क्लास हो जाएगी. ऑफ बैलेंस शीट, a form of financing in which a large capital expenditures are kept off a company balance sheet through a various classification method. Companies will often use off balance sheet. The financing keep their debt to equity and leverage ratio low. ठीक है, especially in the inclusion of a large expenditure would break a negative debt and convenience. An alert, sorry, an alert FI portfolio manager या आप कहें कि financial investment portfolio manager expecting uh, to incur a capital loss on its bond can offset its to reduce the risk of loss to zero by hedging an off-balance sheet hedge to the potential buyer with the forward time of delivery in future. Immunize, ठीक है, immunize to fully hedge or protect an FI against the adverse movement in an interest rate or asset price. ये क्या करता है? fully hedge करता है, protect करता है आपकी investment को at against an adverse movement in an interest rate or asset price. अगर आपकी asset price आपके लिए नुकसान में जा रही तो ये क्या करता है? उसको hedge करता है. Hedging the future contracts. The future contracts are one of the most derivative use of hedging risk. A future contract is an arrangement between two parties to buy or sell in assets a particular time in a future of a particular price. ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। ओके ओके, पता नहीं चल रहा है ना, मैं बोले जा रही हूँ कि वो बीच में हाँ हाईलाइट हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है कि मैम, हम भी मैम सुनते ही जा रहे हैं, बीच में आवाज कट रही है, फिर आ रही है दोबारा, हाँ, तो इस पता ही वजह नहीं से चलता। सॉरी बेटा, ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन में इस चीज का कुछ भी नहीं कर सकती. The ultimate goal of the investor using a future contract to hedge is to perfectly offset their risk in real life. However, this is often impossible and therefore individual attempt to then neutralize risk as much as possible inside. For example, if a commodity to be hedged is not available as a future contract, as investor will buy a future contracts in something that closely follow the movement of the commodities. ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, बाय करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस चीज के लिए, मतलब कि इन फ्यूचर अगर हम फ्यूचर के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, अभी क्यों करेंगे कि हम इस प्राइस भले बाद में पे करें, चीज भले बाद में लें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लें. वो इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि अगर आज हमारा रेट बढ़ रहा है, इन फ्यूचर हम आज रेट हमारा कम है, इन फ्यूचर रेट बढ़ रहा है, तो हमें क्या हो, लॉस ना हो, हमें प्रॉफिट हो, हमारे पास चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हो. Hedging with the future contract, there are two type of hedging with the future contract. इसमें आ जाता है micro hedging and macro hedging. An investment technique used to eliminate the risk of a single
assets. In the most cases, this means the taking of offsetting position that set a single asset. It's basically using future contract to hedge a specific assets or liability. मैक्रो में क्या होता है, सिंपल सिंगल एसेट्स में आप सिक्योरिटीज यही किसी भी एक जगह पे आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, सिंगल सिंगल एसेट्स की इन्वेस्टमेंट कर दी, वो जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप उसको बेसिकली यूज कर रहे हैं, जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक एसेट्स आर लायबिलिटी। मतलब फिर आप बॉन्ड इशू कर रहे हो या जो है ना आप सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, इट्स उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। Hedging with the future contracts may macro hedging is entire duration gap of FI. It's occur with the FI manager use future or derivative security to hedge the entire balance sheet during the gap. For example, example of a macro hedge is index fund manager believe there will be a loss in the index in the upcoming period। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैनेजर मैनेजर सोच रहा है, मैनेजर को पता है या उस, क्योंकि मैनेजर ऐसे नहीं सोचता खुद बैठे बैठे भाई कल मुझे इसमें लॉस होगा, वो मैं आज इसको आज इन्वेस्टमेंट कर दूँ। वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कहते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर हमें हमें जो है ना फ्यूचर में लॉस हो, ठीक है, लॉस होगा, तो हम क्या कहें, अपकमिंग पीरियड में अगर हमें लॉस हो तो हम उस लॉस को एलिमिनेट करने के लिए, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, डाउन साइज टर्न करने के लिए हम क्या करेंगे, द एलिमिनेट द रिस्क ऑफ अ डाउनवर्ड टर्न इंडेक्स, वो हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे रिस्क को डाउनवर्ड टर्न में, और हम उसमें इंडेक्स की तरफ चले जाएंगे। द मैनेजर कैन टेक अ शॉर्ट पोजिशन इन द इंडेक्स फंड फ्यूचर मार्केट that will look a price of for index। Sorry, it's not look, it's lock in a price for the index। Macro versus micro hedging. Most FIAs hedge the risk either at the micro level, it's called a micro hedging, or at them a macro level, it's called a macro hedging using the future contracts. In FI is micro hedging when it employs a derivative contract to hedge a particular assets or liability risk of a single assets or maybe portfolio or a similar asset such as a mortgage portfolio। Micro hedging occur when a FI manager wish to use derivative security to hedge। ठीक है, ये माइक्रो हेजिंग कब अकर हो सकती है, जब आपके एफआई मैनेजर्स जो होते हैं फाइनेंशियल Micro hedging occurs when a FI manager wish to use derivative securities। ठीक है, वो तब होगी जब आपका FI मैनेजर यूज करना चाहेगा डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की इंटायर बैलेंस शीट ड्यूरेशन के, पूरी बैलेंस शीट का जो ड्यूरेशन गेप होगा उसके लिए। अगर वो चाहेगा ही नहीं कि मैं जो हूँ ना डेरिवेटिव सिक्योरिटीज की में इन्वेस्ट करूँ या उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदूँ, तो खुद ब खुद तो बेटा रिस्क हेज नहीं होगा ना। उसके बाद आ जाता है माइक्रो। इन माइक्रो हेजिंग the FI often tries to pick a future or forward contract whose underlying deliverable assets in a closely matched to the assets or liability position hedge. If I am trying to hedge a mortgage, I would pick something similar like a 10 years future conflict of government securities, both driven by the same underlying microeconomics, probable focused on one type of derivative। ठीक है, मैक्रो में फिर ज्यादा लोग आ जाते हैं। हेलो। तो हेलो। आवाज आ रही है बेटा? हेलो, आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। हेलो, अब आ रही है? जी जी मैम, आप ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। नाउ मैक्रो hedging. A macro hedging takes the whole portfolio. A macro hedging takes the whole portfolio, the whole financial institution view, and allows to individual assets
in liability, interest, sensitivity, or a duration to net each other out. It may be the case that a mixed securities best matches for hedge could be many type of derivatives. यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैक्रो हेजिंग में बेस्ट क्या होता है, बेस्ट सिक्योरिटीज कौन सी होती है, मिक्स ऑफ सिक्योरिटीज बेस्ट मैच फॉर द हेजिंग। आप डिफरेंट मिक्स सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, भले चाहे वो आपके बॉन्ड सिक्योरिटीज, तो आपको पता है कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो मिक्स सिक्योरिटीज मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर नहीं हो, दो तीन डिफरेंट सिक्योरिटीज हो जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो। नाउ ऑप्शन, an option is a contract which gives the owner the right but not to obligation. ऑनर को राइट तो होता है लेकिन उस पर ऑब्लिगेशन नहीं होती टू बाय और सेल इन अंडरलाइंग एसेट्स और इन इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर द स्पेसिफिक डेट। ठीक है बेटा, ऑप्शन में क्या होता है, पुट और इसके तो दो ऑप्शन होते हैं, पुट और कॉल के। ठीक है, यहाँ पर आप और जिसके साथ आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक स्ट्राइक प्राइस सेट कर देते हैं अपने सिक्योरिटीज के बिहाफ में कि इन फ्यूचर आफ्टर फॉर एग्जांपल 3 महीने के बाद हम जो है इस प्राइस पे ये सिक्योरिटीज जो है ना मैं आपसे खरीदूंगी या खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन जब 3 मंथ आपके हो जाते हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं होते कि 3 महीने पहले आप लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था और अभी आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको इनी हाउ लेना है। आपका कॉन्ट्रैक्ट तो मेच्योर हुआ लेकिन आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको आज भी यही कॉन्ट्रैक्ट लेना है, नहीं। लेकिन पॉइंट इज दैट अगर आप लोगे तो जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेट की थी सिक्योरिटीज के लिए वो आपको आपके पास आ जाएगी, बाकी रिमेनिंग जो है पैसे आप उनको देके और कॉन्ट्रैक्ट को दे लोगे। लेकिन अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हो, नहीं ले रहे, तो स्ट्राइक प्राइस में जो आपने अमाउंट सेट करके इन एडवांस अगले बंदे को दिया था कॉन्ट्रैक्ट के वक्त, वो कॉन्ट्रैक्ट वो जो पैसे हैं वो आपको नहीं मिले। The seller incurred a corresponding obligation to fulfill the transaction that to sell or buy if the long holder elect exercise the option period to the expiration. The buyer pay a premium। ठीक है, अब देखिए ये बात कर रहा है, तो जब आप स्ट्राइक प्राइस सेट करोगे ना कि 3 महीने के बाद हमने ये प्राइस सेट की है और आपको इस पर ये सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो उस वक्त जो बायर है, जो खरीदार है, वो सेलर को स्ट्राइक सॉरी प्रीमियम पे करेगा। उस स्ट्राइक प्राइस के बेस पे उसको थोड़ा सा कुछ हिस्सा प्रीमियम का पे कर, जो पैसे पे करेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रीमियम कहेंगे। वो प्रीमियम पे करेगा, फिर वो प्रीमियम अगर 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 वो अपना ऑर्डर जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अवेल कर रहा है, तो उस प्रीमियम के साथ रिमेनिंग अमाउंट आप ऐड करके वो कॉन्ट्रैक्ट अपना ले सकते हो एट द डेट ऑफ एक्सपायरेशन। अगर आप नहीं ले रहे तो आपको सेलर कुछ भी नहीं कहेगा, बस वो जो प्रीमियम है वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, वो रिटर्न नहीं होता। इन ऑप्शन वो जो प्रीमियम होता है ना वो उस सेलर के लिए वो जो ये एक सिक्योरिटी होती है, या वो कहें कि वो कि अगर वो 3 महीने अपना प्रोडक्ट आपके लिए बाउंड करता है तो जब जब कोई चीज मेच्योर हो रही है तो उसको लॉस नहीं, उस बायर का सॉरी उस सेलर का रिस्क मिनिमाइज करने के लिए वो जो प्रीमियम है वो पे किया जाता है। वरना भाई कौन आपके लिए 3 महीने तक अपने प्रोडक्ट्स रखेगा और फिर कहेगा 3 महीने के बाद आप नहीं ले रहे, फिर तो वो कहेगा ना कि पहले मुझे बता देते, आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, मैं किसी और को दे देता। इसीलिए ये प्रीमियम सेट किया गया है। An option which convey the right to buy something at a specific price is called a call. An option which convey the right to sell something to specific price is called a put। ठीक है बेटा, इसमें ये ऑप्शन में ये दो चीजें आ जाती हैं, कॉल और पुट।
Basic features of options. Buy a call option on a bond. इंटरेस्ट रेट फॉल, जब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा बॉन्ड प्राइसेस राइज इन अ पोटेंशियल फॉर अ हायर पे ऑफ फॉर अ बायर। ठीक है, अब जो है जाहिर की बात है पोटेंशियल रेट क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, और वो पे ऑफ किसके लिए होगा, बायर के लिए। एन इंटरेस्ट रेट राइज बॉन्ड प्राइस फॉल एंड potential for a negative payoff for a buyer for option is increased. If a rate rise and the price fall below the exercise price (EP), the call buyer is obligate to exercise or option. Thus, the buyer losses is transact by the amount of upfront of premium. It's also called call price. Sorry, call premium. Buyer call option is a strategy to take when interest rate are expected to fall. ठीक है, तो ये इसलिए फिर क्या करेगा, प्रीमियम सेट कर देगा कि अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अगर एक्सपेक्टेड है कि वो फॉल होगा राइज होने की बजाय, तो वो क्या करेगा, प्रीमियम रेट जो है ना वो सॉरी सीपी प्रीमियम कॉल पे सेट कर देगा। बेसिक फीचर ऑफ ऑप्शन, ठीक है, राइटिंग अ कॉल ऑप्शन ऑन अ बॉन्ड। इसमें क्या है, द राइटिंग अ कॉल ऑप्शन इज अ स्ट्रेटजी टू टेक विद द इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड राइज। ये तब ये जो है स्ट्रेटजी तब की बनाई तब के लिए है जब आपका इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। Cation the warranties because the profits are limited and losses are unlimited। ये तो बात पक्की होती है कि भाई लॉसेस, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो फिर भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन लॉस का हमें कुछ पता नहीं होता, वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा लॉस। ये तो सुना होगा ना, हायर रेट हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क भी होता है, लो रिटर्न लो रिस्क, हायर रिटर्न हायर रिस्क। Buying a put option on a bond is called when interest rate rise and bond price fall, the probability that a buyer of put will be make profit from the option of increase। ठीक है, अब अगर आपका इंटरेस्ट रेट क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बॉन्ड प्राइसेस फॉल हो रही हैं, तो आपको ये तो पता होगा ना, इंटरेस्ट रेट सिक्योरिटीज का जब जो है राइज होता है तो आपके बॉन्ड्स फॉल होते हैं, फॉल का जो क्या कहते हैं, इस पे बॉन्ड्स पे जो आप डिविडेंड हो रही है, बॉन्ड्स की प्राइस कम हो जाती है, और अगर बॉन्ड्स का रेट इंक्रीज होता है तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो जो है मतलब बढ़ जाता है। ये वाइस वर्सा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड्स प्राइस कम होगी, अगर इंटरेस्ट बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। इस तरीके से ये वाइस वर्सा है। The probability that a buyer of put will be make a profit in option increases. Thus, if the bond price fall, the buyer of the put option, अगर bond की price fall हो रही है तो buyer के पास put option होता है, can purchase bond in the bond market। तो वो क्या करेगा, purchase कर लेगा bond market में से at the price and put them back to the writer of put at the higher exercise price। फिर वो क्या करेगा कि वो परचेज कर देगा बॉन्ड, ठीक है, राइटर के साथ, फिर वो एट द प्राइस पुट देम बैक टू द राइटर ऑफ अ पुट अ हायर एक्सरसाइज प्राइस। इस पे वो राइटर के साथ इस पे कर देगा हायर एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस में बता चुकी हूँ क्या होती है, इट्स गिव अ बायर अनलिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। वो फिर बायर को पोटेंशियल प्रॉफिट दे सकता है। When interest rate fall, जब इंटरेस्ट रेट फॉल होता है, कम होता है, एंड बॉन्ड प्राइसेस राइज, जब बॉन्ड की प्राइसेस राइज होती है, एंड प्रोबेबिलिटी द बायर ऑफ अ पुट विल लॉस इंक्रीजेस। ठीक है, फिर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी बायर की क्या होती है, उसमें कुछ बायर ऑफ अ पुट विल लॉसेस इंक्रीजेस। ठीक है, फिर उसमें लॉस का चांसेस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। राइटिंग अ पुट ऑप्शन ऑन अ बॉन्ड। When interest rate falls and bond prices increase, the writer has enhanced the probability of making profit. To put a buyer to put a buyer is less likely to exercise this
option which would force to the option writer to buy the underlying bond. When the interest rate increase and bond price fall, the writer to buy the writer to the buy of expose the potential huge losses. To put a buyer will exercise the option forcing the writer to buy an underlying bonds to the exercise price. Now hedging with options. Hedging the stocks using option. Hedging the portfolio stock is easy to convenient using a stock option. Here are the some popular method. Number one is protective puts. Number two is covered calls. Number third is covered calls caller. इसमें पहले में protective puts में क्या बोल रहा है? Hedge against a drop in the underlying stock using a put option. If the stock drops, the gain in the put option offset the loss in the stock. ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? बायर को प्रोटेक्ट करता है अगर लॉस होता है इनमें स्टॉक ऑफसेट। शुरुआत में अगर लॉस होता है तो आगे चल के क्या होता है? फायदा होता है, गेन भी होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि लॉस ही लॉस हो। Covered call hedging against a small drop in the underlying stock by a selling call option. ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? सेलिंग में के लिए क्या कर रहा है? कॉल ऑप्शन दे रहा है। द प्रीमियम रिसीव फ्रॉम द सेल टू कॉल ऑप्शन, वहां पर क्या कर रहा है? प्रीमियम रिसीव कर रहा है किस चीज के लिए? कॉल ऑप्शन के लिए। सर्व अ बफर अगेंस्ट द कोरस्पॉन्डिंग ड्रॉप इन द अंडरलाइंग एसेट्स। उसके बाद कवर्ड कॉल कॉलर है, इसमें क्या कह रहा है? द हेज अगेंस्ट अ बिग ड्रॉप in the underlying stock using the put option while they simultaneously increase the probability to upside through the sale of a call option. Cape floors and collars. ठीक है, what is an interest rate cape? ठीक है, is a derivative in the buyer receives a payments at the end of period in which the interest rate exceeds agree the strike price. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव्स क्या है? बायर रिसीव करता है पेमेंट्स पे ईच पीरियड which the interest rate exceed the agreed with the strike price. An example of CAPE would be able the arrangement to receive payment of each month of LIBOR rate exit. यहाँ पर LIBOR rate जो है लंदन इंटरनल बैंक ऑफर रेट है। हमारे पास कराची जो है लाइबोर चलता है, वो क्या होता है कि स्टेट बैंक एक रेट फिक्स करती है, वो जो है ना लोन के लिए वो बाकी बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इन इंटरेस्ट रेट फ्लोर is a derivative contract in which the buyer receive payment at the end of each period. यहाँ पर क्या हो रहा है कि buyer receive कर रहा है payments को कब? At the end of each period in the interest rate is below the agree risk strike price. इसमें फिर इंटरेस्ट रिस्क क्या कर रहा है? बिलो है। किसके बिलो है? आपकी जो आपकी जो एग्रीड स्ट्राइक प्राइस है, जो पुट और कॉल में आपने ऑप्शंस में जो स्ट्राइक प्राइस सेट की है ना, उससे क्या हो रहा है? बिलो जा रही है। ठीक है, और उसमें क्या कर रहा था? केप में एक्सीड हो रही थी, उससे ज्यादा जा रही थी। फिर वो 2% हो, 1% हो, 5% हो, 7% हो, 12% हो, मतलब उससे एक्सीड कर रही है। अगर 7 है, काइबोर रेट 7 है, तो वो आपको 8 में उसकी 1% के डिफरेंस के साथ आपको दे रही है। इस तरीके से सेट होगा। A collar is an operation strategy that limit the range of possible positive or negative return. ठीक है, ये कॉलर क्या है? एक ऑपरेशन स्ट्रेटजी है जो लिमिट करती है किस स्ट्रेटजी में, सॉरी, जो लिमिट करती है किसकी? आपको आपकी रेंज को। ठीक है, रेंज ऑफ पॉसिबल को, आपकी रेंज को लिमिट करती है। वो किस भले चाहे वो रिटर्न्स की, लेकिन चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऑन द अंडरलाइंग स्पेसिफिक रेंज।